Well, the commencement of the religious rituals for the Ayodhya temple have started with the Dashvid Snan ritual. This 7-day ceremonial observance will persist until the 21st of Jan, culminating with the installation of the idol in the Sanctum Sanctorum on the 22nd of January. The temple trust stated that there will be a diverse representation of acharyas of all schools of the Bharatiya spiritualism, religion sect, system of worship and tradition as well. General Secretary of Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust said that the Pran Pratishtha is expected to conclude by 1 p.m. on the 22nd of January. Meanwhile, we have a special guest who is joining us for this telecast. Rajya Sabha member and the founder of Bajrang Dal, Mr. Vinay Katiyar, has joined us for a discussion on the consecration ceremony in Ayodhya. Mr. Katiyar, appreciate you joining us. I hope मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप सर? हाँ, हिंदी बोलिए। हाँ जी सर, मैं हिंदी में ही फरमाऊंगा सर। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और एक बड़ा उत्सव है ये अयोध्या में। आज हमने काफ़ी लोगों से भी बातचीत करी, एक दिवाली का माहौल है। सबसे पहले इस पूरे उद्घाटन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारा भव्य दिव्य राम का मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है और हो ही गया है। इसका उद्घाटन होना बाकी है, तो वो 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे वो जल्दी से उद्घाटन करेंगे। नरेंद्र मोदी जी की उत्सुकता, उनकी मेहनत, ये दोनों काम में आ रही है। सर, इस मंदिर की एक तरह से कंप्लीशन को लेकर, इसकी फुर्तीली कंस्ट्रक्शन को देखकर आप सरकार को कितना श्रेय देंगे? क्योंकि लोगों को इंतज़ार था, दशकों से इंतज़ार था कि राम मंदिर कब बनेगा। फैसला आने के बाद जिस फुर्ती से काम हुआ वो काबिल तारीफ़ है और इसका पूरा श्रेय लोग भी सरकार को ही दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, ठीक है, सरकार का नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं का है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है, उनका जो सुपरविजन हो रहा है उनके द्वारा, तो ये बड़े सौभाग्य की बात रही है। आगे भी रहेगा, एक संरक्षक के रूप में काम वो करते रहेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मुझे आगे फिर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि ये तो मंदिर बन करके हमारा तैयार हो गया, भव्यता दिव्यता भी हो गई है जी। हमारा शिखर बनना है, शिखर जल्दी बन जाए तो आगे हम लोग बढ़ें, अगली यात्रा शुरू करें, अयोध्या को छोड़ करके मथुरा या काशी की ओर हम जाएं। सर, अयोध्या में सबका ये मानना है कि मंदिर की स्थापना के बाद जो अर्थव्यवस्था है, जो ऊर्जा है, जो एक पूरे शहर का जो रंग रूप है उसमें बदलाव आएगा। ऐसे और भी बहुत शहर हैं हमारे देश में जिनको अब उनका एक जो प्रॉपर ड्यू था, जो किरदार था, वो अभी नहीं मिल पाया। आपको लगता है कि ये उस एक डायरेक्शन में भी एक शुरुआत होगी? हो सकता है। सब हमारे एक्सपर्ट लोग हैं, पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उस पर वो विचार करेंगे और जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर भव्य दिव्य कलश लगना बाकी है, करने के लिए उसकी तैयारी है, उसको जल्दी किया जाएगा। सर, सनातन धर्म भी पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहा है। आपको क्या लगता है कि सनातन धर्म को लेकर ये किस तरीके की एक पूर्ति है, एक किस तरीके की एक उपलब्धि है? नहीं, सनातन धर्म तो हमारा उस दिन का नहीं है, बहुत पुराना है। उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। इसीलिए किसी को भ्रम होने की ज़रूरत नहीं है, न भ्रमित होने की ज़रूरत है।
सर, बीच में मैं विपक्ष को भी लाना चाहूँगा। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि जो भव्य राम मंदिर बन रहा है ये एक चुनावी प्लैंक है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कौन विपक्ष कर रहा है, उसका नाम बताओ। सर, विपक्ष में जब हम कांग्रेस का नाम लेते हैं, आम आदमी पार्टी का नाम लेते हैं, टीएमसी का नाम लेते हैं, सब ने 22 जनवरी का ये लोग जो फंक्शन है, जो मुहूर्त है, उस पर भी आने से मना कर दिया सर। नहीं, ये तो सब काल्पनिक नाम है। इन लोगों को कोई मेहनत कुछ होना है ना, उनका कोई योगदान है। जो कुछ योगदान है सब राम भक्तों का है, बाकी का नहीं है। बाकी तो ये लोग ऐसे ही आते हैं, सकौ पर छोड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं। उनकी पार्टी अनुमति नहीं देती है। सर, आपको लगता है कि इस उद्घाटन के बाद, 22 जनवरी के बाद, अयोध्या फिर से एक बड़ा केंद्र बन जाएगा? हम सुबह से लोगों से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस मंदिर की स्थापना हो रही है और जो ऊर्जा दिखाई दे रही है वो किसी क्रांति से कम नहीं है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इन जज्बातों से? नहीं, हम पूरी तरह से इसको कहते हैं कि ये ठीक है। जो लोग कह रहे हैं, बढ़िया कह रहे हैं, उनके हम कृतज्ञ हैं। सर, हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। All right, Mr. Pavan Sinha, Hindu Dharma Guru, is also joining us on the broadcast. Mr. Sinha, appreciate you joining us, and you've been on our shows a number of times. First up, the logical thing would be to understand from you, how do you view what's happening in Ayodhya on the 22nd of January? It's a new start, it's a new beginning, but it's an old story. Thank you for inviting me to this debate, to the discussion. Thank you. What is going to happen on 22nd? It's definitely it's going to be a part of the history in modern India. See, this struggle was 500-year-old struggle nearly, and people participated in this struggle. And the time when there was no favorable government, then too we participated in this struggle, and finally the outcome with the Honorable Supreme Court is this, that we are going to have Ram temple at the place where Shri Ram got the birth. So this is definitely a historic movement, and the preparations were ultimate there, because I have been in recent few days, I have been thrice there, and I have seen that the preparation were with full swing, and people are throughout India very, very, very encouraged, very, very euphoric about this temple. So a few political parties, a few politicians, they are unnecessarily creating trouble and disturbances, and better they have done it because now they are exposed. But by and large, if we see, that's a means positive wave is there throughout India, and many even Muslims are supporting it. They are not antagonized, and this is wrongly said by many Muslim leaders that they are feeling threatened. They are not feeling threatened at all, and they too are happy, and they too have congratulated me also, like so many other people. So wonderful event is going to be there on 22nd, and definitely it will have a lasting impact on Indian civilization and economy. Right, you mentioned economy. That is obviously a big plank over here when it comes to Ayodhya, and I keep reiterating this logical next step, Mr. Sinha, is that if Ayodhya is going to have this windmill of change, it's only logical, it's only pragmatic, it's only practical that there are other dhams in our country, there are other places of worships in our country as well that require the same amount of attention. Do you think this is also going to serve as a domino effect? Yeah, I'm fully in agreement with you that all the dhams, all such religious places, all such popular places where people go for tirthat and all,
So they should be decorated the same way, because they not only are the centers of Punya, they are not only the centers of peace, but also if certain sports are developed there, if certain hotels are developed there, if the roads are clean, which is a wonderful movement initiated by our Prime Minister. So if temples are clean, if roads are clean, the ambience is good, then definitely it will motivate people there, the people who are living there, to establish business there, and definitely it will bring a boost to the economy. And we have seen that not only the people from India alone, but people from outside India are coming to these places to learn, to meditate, to do yoga abhyas and so many other things. So it is going to boost the economy. See, in India particularly, we see that all these religious places, all the places of worship, they are a very good source of economic development, particularly for the native people, and also for the government. If foreign exchange is coming over here in India, so definitely it will boost the economy. So economy does have an impact there, and these religious places will have an impact on the economy also. All right, you're absolutely right about that, sir. Let me also open my colleague Anil Kumar Mishra, who is in Ayodhya at this point in time. Anil, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनिल, बताइए आप कहाँ हैं? हमारे दर्शकों को आपके पीछे का जो नज़ारा है काफ़ी अद्भुत है। लोगों से बातचीत करके बताइए आप कहाँ हैं, क्या माहौल है, क्या प्रतिक्रिया है उनकी। कुछ ही दिन रह गए हैं, हफ्ते से भी कम रह गया है प्राण प्रतिष्ठा को। क्या प्रतिक्रियाएं हैं और किस तरीके की एनर्जी, ऊर्जा आपको देखने को मिल रही है अयोध्या में इस वक्त? ऐसा लग रहा है आपके पीछे दिवाली मनाई जा रही हो। इस टाइम मेरी मौजूदगी है राम की पैड़ी के पास, जहां पे ये स्थिति है। इतनी ज्यादा भीड़ है और इतना ज्यादा साउंड बज रहा है, इतने ज्यादा भजन हो रहे हैं, ज्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे किनारा लेना पड़ा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। राम भक्तों का जुनून इतना ज्यादा है कि खचाखच पूरा राम पैड़ी भर गई है। नदी का किनारा जितना है, नया घाट जिसको कहा जाता है, पूरा खचाखच लोगों से भरा हुआ है। इस नाते मैं किनारे आके, क्योंकि यहाँ पे साउंड का जो आवाज है यहाँ कम है, इसलिए मैं बात भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे साउंड इतना ज्यादा है मैं बात भी नहीं कर सकता। लोगों का जुनून इतना ज्यादा है कि अभी से राम भक्तों का हुजूम अयोध्या की गलियों में उमड़ पड़ा है। जिसको देखो वही राम नाम का संकीर्तन करते हुए अयोध्या आ रहा है। और श्री रामचरितमानस की एक चौपाई याद आती है कि जो जैसे ही तैसे उठ धावे, बाल वृद्ध का संग न लावे। जो जैसे पा रहा है अपने आराध की एक झलक पाने के लिए अयोध्या की तरफ उमड़ पड़ा है। बूढ़े, बच्चे, साधु, संत, योगी, गृहस्थ जितने हैं, सभी लोग अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। और जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने निवेदन किया हुआ है कि 22 जनवरी को कोई भी राम भक्त या कोई भी श्रद्धालु अयोध्या रहे, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत सख्त रहेगी। लेकिन अगर अभी का देखा जाए तो लाखों राम भक्त प्रतिदिन अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपने रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। जी, वहाँ पे लोगों से बात करने की भी कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या महसूस कर रहे हैं वो। एक तरह से ग्राउंड रियलिटी जानना, ज़मीनी बारीकी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अनिल, पूछताछ करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा भीड़ से अलग हट के लाइव दे रहा हूं। वजह इसकी ये है कि वहां पर इतना ज्यादा लाउड साउंड बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, डीजे बज रहा है, उसमें आवाज नहीं आती। इस नाते मैं किनारे आके लाइव दे रहा हूं। बहुत ज्यादा शोर है, बहुत ज्यादा राम भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिस नाते मुझे किनारे आकर जो वास्ट स्थिति है, जो 0 ग्राम की लोकेशन पास वापस आएंगे। तब तक आप कोशिश करिए कि आप लोगों से कुछ एकत्रित कर लीजिए, उन लोगों को जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है वो जाना। पवन सिन्हा जी, कमिंग बैक टू यू। Well, you know, this is obviously a great moment, and you know there is no denying that. But the fact of the matter is that you know there have been epicenters of religious gravitation. You know, if you look at you know, the Vatican has been one of them. The Makkah Medina
has been one of them. Do you think Ayodhya is also on its way to becoming that trinity of epicenters that the world can definitely call as something wondrous, like they have done to Makkah, Medina and the Vatican? From last 1 year, I have been noticing that it has already been started. Then the first thing that government has decided, UP government has decided, and Mandir Yogi ji went there for this. They want to open Ramayana Sangrahalaya, which is going to be a very important piece of work on the history of Sri Ram, on the history of Sanatan Sanskriti, and on the history of India. Then this one Ramayana University is also going to open up. When, I cannot say, but it is going to be open there, and definitely they will do the special researches on Sri Ram. Then there are so many other meditation centers that once upon a time in Rishikesh, sudden grooming was there of meditation center, yoga center, etc. So the same thing has already been started in Ayodhya, and many people from outside India, they are planning to visit Ayodhya after the vacations of their kids. I think in 24 itself, we will be seeing a good influx of foreigners and NRIs to Ayodhya, which will give it a shape of, as you very rightly mentioned, center of religious gravity. Definitely it is going to be, because Sri Ram is a center of worship, is not only for Indians alone, but also for all the people of the world. And people are now very inquisitive to know about him. People from Indonesia, people from Thailand, people from other Far East countries, they are very much interested in knowing about Sri Ram. So hitherto we did not have any center per se where they can gather the knowledge of Sri Ram. But now there will be many centers, and plus in addition to that, there will be some yoga center, there will be some spiritual exercises, some katha, and so many other activities which once upon a time were started in Rishikesh, for which Rishikesh is now known throughout the world. So the same is going to happen in Ayodhya in 2024 itself, I'm very sure. So, this is obviously an event which does not require the kind of marketing and promotion that it's doing for itself. But, there will come a time that India will have to position itself to the world, like a number of other countries have done when it comes to religious and wondrous tourism. Do you think that starting with the Ayodhya is going to be the wise thing to do? Yes, definitely. And hitherto, we the people have become the ambassador of Ayodhya. So far Ayodhya doesn't need any special tourism advertisement and all, but in future we shall be needing it, because we'll have to hammer the people around the world that please come here for the peaceful soul, for the good body, for the knowledge, to know about Sri Ram, to know about Indian history. Please come here. And definitely when our voice goes throughout the world, the people from the world will definitely come here, and they will find that yes, not only the body but also the soul is being purified in Ayodhya. So it will be a great boost. But in future, government will have to have such policies to advertise, because every country has to do it. Nowadays, this is a compulsion. But so far, it is not needed. At least for 1 or 2 years, it will not be needed. But thereafter, there should be such policies related to tourism.
Right, Mr. Sinha, and obviously, you know, this event also requires a renewed interest in what our legacy is all about, a renewed, capability of what Sanatan Dharma is all about. Do you think this is also something which will percolate down our culture and society, by which I mean, you know, the schools and the social fabric? Yes, definitely. Definitely. Because what the students have studied, even the people like me and you, though we have a deep faith in our history, in our Sanatan culture, etc., even what we have studied about Shri Ram is is through Western glasses. What we have seen the Ram is through the Ram Leelas only, or through the Katha only. But now we'll get the chance to see the Shastra, to see what Valmiki is saying, what Ram has really done in his life, what is Ram Rajya. And there will be many new researches coming, because now there is a center where many scholars would gather, and they will do serious researches on Ram. So I am very sure that in coming times there will be good pieces of work on Shri Ram which will help all of us, because he holds that part of the history which is not very obvious to even Indians. All right, sir. Ram will be understood as a person of the history, and the time will also be understood as peculiar history of Sanatan culture. Mr. Sinha, appreciate you joining us. Wonderful thoughts there. Thank you so much. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.